if I have to define home, I think it's more of a feeling than a place. Yeah, the feeling of comfort, the feeling of safety, the feeling of, you know, home for me is a place where I can just be myself without thinking twice, and I think this is that place for me. This house is very, very lucky for us. Very lucky. There is warmth, there is, I don't know, there is some kind of intention here, which I really like. You know, almost a year ago when I started on my own and my channel on YouTube, I didn't expect the love that you guys gave me. And honestly, this year is a season of reruns. So it's a rerun of my most favorite show. It's called At Home. Last season clocked over 60 million views. So thank you so much. And we are back with yet another season. And today I'm shooting with someone जो मुझे राखी बांधती है. Yes. नाम में ही सादगी है, नाम में ही जन्नत है. तो yes, today without further ado, I am at actually Jannat's house at the Zubair Rahmani home, and today let us take you inside their house. At home with Jannat Zubair. Hello, what's up? Welcome. क्या हाल How है? are you? I actually put up a story today before I came here. I don't know if you saw. I saw and I replied to that story कि अब आप ही जाओ because you are late and how? Listen, Fashionably late. Listen, but 1 hour I was caught in traffic from Andheri to here. और मैं देख रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तैयार हो गई, स्टोरी डाल रहा है, मैं किसी के घर जा रहा हूँ जो मुझे राखी बांधती है, ये है तुम आप ही जाओ यार. But listen, let's start it there. Last year on around this time, 15th Yeah. May, we had shot the Mother's Day episode. And you had told me that you'll tie me Rakhi. Yeah. And luck had it, I think God wanted, and we met at Ankita's house. Yeah. And you actually tied me And Rakhi. yes. Rakhi बांधनी पड़ेगी इस साल भी. Of Actually, course. every year. और गिफ्ट देना पड़ेगा इस साल भी and every year. Done. But thank you for inviting us home. By the way, let me tell you that our episode, which we did with your mom and Nayan, has clocked over 40 million views. Just that one episode across YouTube Shorts. एक YouTube short पे 10 million, 8 million. What are you saying? Really? The part where you're saying that I am going to cry at my wedding, and Yeah. it has 11 million only on YouTube, and on Facebook, so let's not even get there. Oh wow. I'm telling you, it was like one of the best How episodes. sweet. I had no idea about this. I'm hoping that we reciprocate and replicate the same thing. But tell me In the this home tour energy. Yeah, but you've done this entire home. So majorly my dad, but क्योंकि मुझे यहाँ पे घर में बहुत साल हो गए, उसके बाद जब हमें थोड़ा revamp करना था, then it was me, but mostly it's my dad and me. So like I've assisted him kind of, but mostly it's his brain. Also, thanks to him, this is happening. It is So I'm happening, very- and I must say, I have never done a home tour, and I was not willing to do any home tour. This is just happening for Nayan. We are only doing like a part of this, but when I told my mom that Nayan is coming because you're doing a home tour, and she's like, "What? Home tour? हम तो नहीं करते हैं." मैंने कहा नहीं, वो actually is like, "Did you speak to daddy?" I said, हाँ, उन्होंने ही बोला है. Then I spoke to Komal. हम सच में कर रहे हैं, हमने बात करी. So it's only happening because of Nayan, but I don't do it because home is very like. Thank you so much. Yeah, but tell me, when we enter, this is the whole energy that you brought in, right? Like it's a mix of golden and white. Off-whites and golds. So that yes. was the whole idea. Absolutely. I think it gives you the sense of, it's very calming. It's very like, it's very positive. मुझे ना बिल्कुल भी, और डैडी को भी, और मेरे घर में मम्मी हैं, हम किसी को भी ना बहुत ज़्यादा डार्क इंटीरियर्स या फिर डार्क लाइटिंग, वो वाइब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. तो हमारा जो पहले वाला भी घर था वो भी हमने ये सेम कलर पैलेट में रखा था, और यहाँ पर भी हमने हमारे पूरे घर को बहुत ही ऑफ वाइट्स और गोल्ड्स में ही रखा हुआ है. तो टेल मी समथिंग, यहाँ ये जो मिरर है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? लाइक दिस हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर? कैन आई बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो. अच्छा, आई डोंट नो, बिकॉज ये मेरे मम्मी डैडी लेकर आए थे. ये सिर्फ मैंने घर पे लगा हुआ देखा. मैंने कुछ चीज़ें निकाली थी कि हमें ऐसा लुक एंड फील चाहिए यहाँ का, और फिर कुछ चीज़ें मैंने जाके पिक करी ढूंढ के, फिर कुछ मम्मी डैडी लेकर आए. तो आई थिंक ओवरऑल फिर उसके बाद ये ऐसा बन गया.
Wow, and I can see the lighting. Yeah, everywhere. yeah. I think lighting is very important in a house. I mean, the correct kind of lighting can Lighting. change the entire vibe and Yeah. just elevate the home. I totally agree. I totally agree. Like I've gotten a home in Kolkata, which we are doing up right now. Yeah, Lighting is the most important. It's thing. very Like, I've important. told my brother that everywhere I need lights everywhere. Because if I'm home, I want it to be like completely lit. lit up. Yeah, I see that there. What is that? तो बेसिकली उसमें दुआएं हैं Okay. और ये फ्रेम अयान से भी ज़्यादा बड़ा है. इट्स दैट ओल्ड. सो आई थिंक इट्स बिन अबाउट 19-20 ईयर्स सिंस हमारे पास वो है. और पहले भी जो हमारा घर था, हमारे एंट्री के जस्ट बाद हमने वो फ्रेम किया था. और यहाँ पर भी जब हम शिफ्ट हुए तो हमने एंट्री के जस्ट वहाँ पर उसको फ्रेम किया है. So what does it say? दुआएं हैं उसमें. अच्छा. Wow. अलग So अलग. basically, कलमा है, दुआ है. So it's basically like whoever enters, they get. Yeah, that energy. Wow, and And you whoever can just also see goes, that. steps out, they get dua. Yes. Oh, wow, that's so good. Yes. And now we'll move into the house. Listen, but tell me about this entire space. Like, who has designed this? This is me. This is fully you? Fully Oh me. my god, I love this. I love the little I am a crockery person. Not many Yeah. people know that. Really? I'm obsessed I have with never met a crockery person ever in my life. I You are am- the first crockery person I'm meeting I today. am obsessed with crockery. Really? Obsessed with crockery. I What can't kind of an even- obsession is that? Who is I obsessed with don't crockery? know. Nayan is obsessed with crockery. Listen, I'm going to Delhi and To buy crockery. Yeah, there is a Banjara market and they have like asymmetrical crockery. I'm also very interested in pottery. Like I'm going on Oh, my that even birthday. I like. You've designed this whole Yeah. thing. You set up the table is set every day. Yeah. Wow. And especially when all of us are here, like all four of us, which is very rare nowadays, you will hardly see me, mom, dad, and Ayan on the same days because everybody is now so busy. हम कहीं रहते हैं, daddy बाहर, like today daddy is not home, Ayan is now going. तो लेकिन जब सब होते हैं, so we make sure that you know we are eating together and the table is set up nicely and all of that. So yes, this is me and. Even I like it. I mean, maybe I am also a crockery person. No, I See, could I be. told you, I I'm could be telling because I you, actually pay attention to इतना detail. कि golden चम्मच चाहिए और golden fork चाहिए और हाँ भैया, and then you know this is entirely in browns and beige and off-white. yeah, Did you pick them up? everything, Oh. everything handpicked. खुद जाके Wow. खुद जाके मैंने एक चीज़ पिक करी है. जिसका सेट नहीं मिला उसको ऑनलाइन सर्च किया कहाँ मिलेगा, फिर वहाँ से मंगाया है सारा. और ये सब अलग अलग है बट उसको कैसे मैं मैच कर सकती हूँ, कैसे वो अच्छे से मैच होके सुंदर लगेंगे, वो सब ढूंढ के लगाया है. I am impressed. So let's sit on the dining table. So tell me, do you know how to cook? अभी Laughter Chef में तो we see you cooking, but उसके बाद कभी घर पे बना के कुछ खिलाया है ना? No, What? Why? because I can only cook. My cooking skills are exclusively for Laughter Chefs. This is what I tell everybody. I am an exclusive chef just for Laughter Chefs. बस उसके इर्द गिर्द मेरी कुकिंग नहीं चलती है क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आती है कुकिंग करना और मुझे कोई शौक नहीं है. वहाँ पे मैं करती हूँ बिकॉज मुझे मज़ा आता है वहाँ पे कुकिंग करने में. यू नो यूर फिगरिंग इट आउट कि अच्छा ये बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो उधर मज़े मज़े में हो जाता है. बट ऐसे घर पे कोई मुझे बोले कहा जाके खाना बनाओ तो मैं नहीं बना सकती. But listen, when this light, where did you get the lights done? ना दैट माई डैड वुड नो. But lights are very important. Lights are very important. ये cooking से how did you just jump No, onto the suddenly, lights? you know, I'll tell you why. Because suddenly I see, because we are sitting in a lit up place, your face is actually glowing. But it's- I am a skincare paglu. But by it's the way. not just because of the lights, you know that, right? Yeah, of course not. I'm Yeah. a skincare paglu. Everybody who calls me on WhatsApp calls, they only see me doing skincare, doing whatever. What is your skincare routine? So basically my skincare routine is very simple. And you know lately I've realized that अगर आपका skincare अच्छा है तो ना आपको ना मेकअप की ज़रूरत है ना आपको और 10 चीज़ें करवाने की ज़रूरत है अपने चेहरे पर. I agree. सो आई फील ये मैं पिछले 2-3 साल से रेगुलरली ऐसे रिलीजियसली अपना स्किन केयर करती हूँ. बट अगर मैं बोलूँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो इवन व्हेन यू आर इनडोर्स, जैसे लोगों को लगता है अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर बाहर धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन, बट ऐसा नहीं होता. ये जो लाइट्स भी पड़ रही हैं इससे भी आपको सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करती है. तो सनस्क्रीन वेदर इंडोर और आउटडोर, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ गुड मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ गुड फेस वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई बिलीव नारियल पानी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, है ना, hydration. हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले तो मैं पानी भी बहुत कम पीती थी बट अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं
1.5-2 लीटर तो पी लूँ पानी, इतना Good. तो मैं पी लूँ, तो Yeah. उतना मैं पी लेती हूँ. बट टू टॉप इट ऑल देयर इज दिस वन थिंग दैट आई ऑल्सो drink. So I don't just apply my skincare, I also drink my skincare, and I use this Oziva ka Gluta in the flavor strawberry because I really like the strawberry flavor. Have you ever tried the Gluta? No. No, you want to try it now? It's really Yeah. it's very tasty also. It's very refreshing. So it's not like कि वो कोई med जैसा है और अलग सा taste है. It's very tasty. We'll try it now. Done. This is you have to drink this. Yes. So basically, ये रहा पानी, और ये मैं ठंडे पानी में पीऊंगी. तुमको बना के दे हाँ, देती of मैं. ठंडे पानी में पीऊंगी बिकॉज अभी गर्मी बहुत हो रही है. सो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग लाइक आई सेड. तो अभी मैं ठंडे पानी में से डालूंगी. नाउ यू सी द फिज आल्सो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. नाउ यू सी. कैन यू सी दिस? आई पुट इट इन दैट आल्सो. So now let it dissolve. Now you let it dissolve. You can smell it. Smells strawberry. Yeah. It smells good, no? Yeah. It's like कोई ऐसे जूस के जैसे ही स्मेल करेगा. Yeah, it's true. तो एक बार डिसॉल्व हो जाएगा, then you drink it. So what is this like? What does it help in? You're drinking it every day. Every day in the morning. I drink Oh. it every day in the morning. Yeah. And- So this and nariyal pani every day in the morning. And what does it help in? So basically these are Gluta fizzy tablets. Okay. Okay, you try. It's actually tasty. It's nice. It's like a mocktail. Yeah. It's sometimes ऐसा लगता है better than a mocktail. Yeah, it's cool like summer drink. So basically it helps with dullness, even tone, dark spot reduction और sun damage से भी protect करता है. And like you have it every day. I have it every day in the morning. And how many like कब से you are having it? I think approximately 2 months. I think थोड़ा ज़्यादा हो गया 2 महीने से. Wow. And I can already like feel it, like not just see it but also feel it. Like you also feel when your skin is healthy, Absolutely, right? I Like agree. glowing, and then you feel really nice about it. I think I've been feeling that. I think you're a certified skincare paglu. Are Really? you? I am one. And after this, even I'm going to try this. And after 2 months, we are meeting. I will show Then the results. I will actually judge. Done. कैसा लग रहा है? अभी भी Done. your skin is quite nice though. Yeah, I'm actually good Because with you're a skincare paglo that you've already mentioned 3 times. Done. I know it. fully. And I also believe that skincare is for everybody. I don't wear makeup also. I don't wear makeup at all. Because अच्छी है ना तुम्हारी skin. Yeah. और अच्छी हो जाएगी. Thank you. But अभी हम गेम खेलेंगे. कि अब जब ड्रिंक आ ही गया एक और छोटा sip game. like ऐसा वाला कि sip. Never have I ever. Never have I ever. अरे And if वाह, sip if very you nice. have. तो देखो तुम 3 सिचुएशन बोलोगी. अगर मैंने किया है तो मैं Oh shit, पीऊंगा. मैं सर्च करके बोलूँ please. I'm हाँ, very bad चलेगा, at it. चलेगा. ठीक है. और मैं 3 सिचुएशन बोलूंगा हाँ. जो अगर तुमने किया है तो तुमको पीना पड़ेगा. Okay. ठीक है. अब बाकी लोगों को पता चल जाएगा. मैं तो एकदम तरकता भरकता बोलने वाला था, तुम भी प्रिपेयर कर लो. ठीक है. पहले तुम स्टार्ट करो, फिर मैं तुम्हारे लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछूं. सिंपल पूछा और फिर तुमने मुझे एकदम आउट ऑफ सिलेबस अगर आ गए तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, चलो तुम पूछो पहले. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. नेवर हैव आई एवर भूल गया. hit somebody because they were behaving badly or they spoke to you badly. Never. Never. I've never hit anybody except for my brother, but that's like different. No? Yeah. No. Not your brother. Never. Like never have I ever been so angry that I But have मुझे कभी reacted. मारने की जरूरत ही नहीं But पड़ी. reacted. Of course. How will I not? It is so different. Like तुमने बोला मारा ही कि नहीं मारे? मारा तो मार मैंने तो कभी हम किसी देंगे को. तुम्हारे लिए. तुम बताओ फिर हुआ क्या था वो तो बताओ. होता रहता है, मतलब गुस्सा. आप गुस्से की बात कर रहे हैं, राइट? कि कभी आपको ऐसे गुस्से वाला रिएक्शन आया है कि नहीं? वो तो आता रहता है. What is it that triggers you or gets you angry instantly? Because you are usually a very calm person. Yeah. And you're very quiet, sweet, sorted. But I know that there is a feisty side to you where people can't mess with you. What is it that you feel like this is where the boundary lines are drawn? मुझे बस ऐसा लगता है यू नो व्हेन आई एम ऑन सेट से ऐसा कुछ. एक तो मुझे झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है. अगर कोई गलती भी हो गई, अगर कोई चीज़ जिस तरीके से नहीं होनी थी उस तरीके से हो गई, जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट. गलती के लिए भी जस्ट बी ऑनेस्ट. अगर कोई उसमें यू नो दे ट्राई टू मेक कहानीज एंड देन दे ट्राई टू outsmart you and you know all of that, I think And you understand. and then you understand and then you're like, listen, don't do that with me please. I think that is when I'm just like, mat karo aise. Okay. आपका सवाल. Never have I ever deleted a message just to look unbothered. Listen, you must have. I can say it.
You I have. did it परसों रात को. Why? I had a fight with a friend who I used to look at a little differently, like a sister. Okay, friend only, but I used to feel very protective, and there were things said to me where I didn't like certain things. And then like I did message something. and then you're like, leave it. I'm like, it's okay. Like, it's okay. I can't change. Like, I'm getting hurt because I feel that person is very important to me, but maybe that person found it easy to tell me that because I'm not that important. So if I'm not that important, this message is also not that important. So मैंने वो Delete कर दिया. आपने भी किया ऐसा? Unbothered लगने के लिए? नहीं, just मैसेज डिलीट कर दिया कि गुस्से में कर दिया, फिर लगा कि यार छोड़ो या फिर आई डोंट वांट टू. नहीं. ऐसा नहीं किया? नहीं. मैंने अगर कुछ कर दिया तो फिर मैं डिलीट तो नहीं करूँगी. अच्छा. हाँ. और अगर मुझे ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि मैं ये मैसेज करने के बाद रिग्रेट करूँगी, देन आई विल टेक माय टाइम. जब तक कि फिर मैं 100% श्योर नहीं हूँ तब तक कि मैं नहीं करूँगी. Okay, the next one, the last one. Let me give you a तड़कता. तड़कता Never भड़कता. have I ever cried my hearts out after a heartbreak. After a heartbreak. Heartbreak. दिल टूटा है कभी? पी. कोई ढंग का सवाल पूछो मुझे तुम. पी. मैं तुम्हारी बहन हूँ. यार इसलिए पी. I put my foot down. पी. I am an exception. You change the question right now. Never have I ever. Okay, go. Never have I ever liked somebody. बाहर नहीं आना चाहता है उससे. हाँ बोलो. हाँ, like somebody, but couldn't express it or didn't want to express. No. Honestly, no. It's very difficult to even like people right now. Generation. No, I'm being honest. सच में. Shit. ऐसा कोई अभी तक के. I don't think so. It is very difficult to like people. It is very difficult to like. Clearly, why we are Yeah. single. Yeah. But absolutely. what is your idea of love? Like, why do you say that? Like, it is very difficult to love people at this point. You know, to be able to find somebody who's authentic, who's ambitious, who is genuine, who is a gentle person, who's kind at heart, smart, intelligent. So the बहुत list सारे would go list हैं. on. And Have you on. ever been cheated of money by people? By money, yes. Drink. Yeah. How much money? That I wouldn't know. That my dad would know. I mean, But I do to the know, tune? but I can't. I don't want to like. But it's been bad. Approximate कितना? अच्छा खासा. गाड़ी तो आ जाती. हाँ, गाड़ी बट कौन सी वाली? ये क्या नया नहीं क्या कर रहे हो तुम? ये नेवर हैव एवर मैं इट्स either you drink it or don't drink it. इसमें Never have I ever में सारे सीक्रेट्स आते हैं. चलिए आपको मैंने बोला था, आप मुझे तरता पूछिए, आपने पूछा नहीं. चलिए पूछिए. यार काश तुम्हारी ये वाली स्किल्स मेरे अंदर होती. हाँ, देखा. Now you're doing a podcast. It might as well come. ले लो सारी स्किल्स. तुम्हारे तो मुझे कैसे आ रहे हो. मुझे खुद को आंसर पता है इसका. जो मैं ये पूछना है मुझे पता है तुम क्या बोलोगे. पूछ ले, मैं सच्ची बोलूंगा. पर मुझे पता है ना आंसर क्या होगा, तो पूछ के भी मतलब नहीं है. What is it? Never have I ever enjoyed a little bit of drama secretly. He'll be like, मैं तो openly enjoy कर. Secretly? I तो love drama. Drama is my second name. अच्छा मुझे बता फिर लास्ट टाइम किसका ड्रामा तुमने एंजॉय किया था. मैं भी अब इसके जैसे ही पूछूंगी सवाल, तड़कता भड़कता. Last time? किसका ड्रामा एंजॉय किया. मतलब किसका कलेश? और क्या. अभी no don't act like all. I'm doing Splitsvilla interviews every other day. There is a kalesh. अच्छा so you enjoy that. Yeah, I think very recently, like there was a pair, Diptanshu and Sandy, who were a connection on the show, and outside they are like at loggerheads, okay? And we were at Yuvika's party, and the director of the show, Kunal, they just made them meet, and I was the one who clicked the video, not realizing that it will become like a crazy thing. I thought, oh, it's a casting reunion type. Okay. But bro, it was full drama. मतलब ड्रामा एज इन वो उसके बाद जो फॉलो अप हुआ है वो ड्रामा है कि पीपल बोथ देयर फैंस आर एट ईच अदर कि दैट कहीं मजा तो आता है कि कलेश है. बट यू एंजॉयड दैट. मतलब एंजॉय मतलब थोड़ा मजा तो आता है कि अच्छा सीधे से बोल दो ना एंजॉय करा मैंने. See now he's fighting. एंजॉय तो नहीं बट इट वाज ओके. आई डिडंट माइंड इट.
such a manipulator. So now you know he's enjoyed it. Clearly he's enjoyed it. Please. He's just. कभी-कभी I meant drama people around. तो ये और क्या था? नहीं ये तो इंडस्ट्री वाले लोग हैं फिर भी बट अदरवाइज Are they not people? What do you mean इंडस्ट्री वाले लोग हैं? No, I'm saying not See, celebrities. यही होता है. अगर तुम मुझे बोलोगे तुम्हारे जैसे सवाल पूछने तो फिर मैं ये कर. बहन आप तो भूल गई कि मैं आपका भाई हूँ. ठीक है रुकिए. But on that note, we'll finish this and then we'll move to the other part of the house. Where are you taking me next? I think since you said that you're a crockery person, I have this crockery shelf. Let's go there. Crockery shelf? Yeah. What? You have a crockery Just shelf? for you. Chalo na. Listen, what is this? This is the crockery shelf. You have got this. No, this is not me at all. This is fully my mom and my dad. Fully. इसमें मेरा कुछ भी नहीं है योगदान. राजशाही दरबार में बैठने से पहले जैसे आता है ना crockery. Yeah. और देखो इसमें भी everything is gold. Yeah. And off white. Yeah. मतलब मेरे घर में literally like all of this you see, it's very. मतलब ऐसा लगता है इसमें कुछ पीने के पहले उसे लगेगा कि अरे भाई रहने दो. मतलब do you guys use this only on a daily basis? Not on a daily basis. क्योंकि पहली बात मैं तो पीती ही नहीं हूँ ना चाय ना कॉफ़ी. मेरे पेरेंट्स भी माय डैड उनको सिर्फ ब्लैक टी पसंद है. उसके अलावा ना अयान पीता है ना मम्मी पीती है. कोई नहीं. मैं और अयान पीते हैं आइस्ड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग जो कि हम इसमें तो नहीं पी सकते. तो हम इसमें तो नहीं पीते. बट ऑल ऑफ दिस इज इसमें पी सकते हो. हाँ बट इसमें भी हम नहीं पीते हैं. ऑल ऑफ दिस इज लाइक अच्छा है स्वीट है. बट आई शो यू वन थिंग. दिस कैन यू सी दिस. दिस इज अ सूरमा बॉटल. दिस इज माई दादीज. डू यू नो व्हाट सूरमा इज? करेक्ट. सूरमा लगाते हैं. हाँ उसके अंदर ऐसे निकाल के यू इट्स लाइक काजल बट नॉट काजल. दिस इज अ सूरमा बॉटल. दिस इज माई दादी सूरमा बॉटल. दिस इज दैट दिस मस्ट बी दादी की भी पुरानी है ये. तो ये होगा कुछ 150 साल पुरानी. What? Yeah. 150 years? Yes. Wow. And your father actually belongs to a royal family, if I'm not mistaken. Yes. Royal family from? Lucknow. Oh wow. So basically there is this place called कुकरा जो लखनऊ से 3-4 घंटे दूर है. और वहाँ पर हमारा पूरा आज भी है. मतलब मैं पहली बार गई थी 2024 नवंबर. मैंने खुद जाके पहली बार देखी थी चीज़ें. मैंने ब्लॉग भी डाला था. हाँ मैंने ब्लॉग भी डाला था वहाँ का. तो वहाँ पर आज भी उसी टाइम के फर्नीचर्स हैं, चीज़ें हैं और वो महल है. Wow. तो वो सब मैंने पहली बार अभी 2 साल पहले ही जाके देखा. I think that is completely visible It's from your reflecting dad's choices. tastes and choices and 100%. things. I can see NLV का वो Yeah, it's all LV, Versace, all of that. Yeah. Yeah. Wow. Yeah, so it's all like. But it's amazing. It is actually. And this is not all. This is not all. Acha, there's more. Yeah, there is a lot more. So everything that you see in this house, Nayan, is just half का भी आधा of But what before we go actually got. wherever we are going, Yeah. please tell me about this picture. I This think is a there gift. is. This is a gift. I just got it on Laughter Chefs. Somebody gifted this to me. नहीं, but इसमें I think कुछ कांच का काम हाँ किया इन्होंने हुआ है. किया जो मुझे अभी तुम्ही ने बोला. इसमें हाँ. कांच नहीं है. इसमें वो नहीं होता. मुझे नहीं पता. type. बीड्स भी नहीं है. कुछ तो है. उन्होंने आई थिंक वो कपड़े के ऊपर एग्जैक्टली बट उन्होंने इतना करेक्ट वाला लगाया कि एक्चुअली भी कपड़े पे वही था. तो मुझे तो लग रहा था कि ये कपड़ा शाइन कर रहा है फोटो के अंदर. True. Can you see this white sand? This I got from Mauritius. And the shells also. This is from Mauritius. This, yeah. The white sand is from Mauritius. And ये जो दिख रहा है, this is also from Mauritius और मलेशिया. एक जगह का है ये. मैं लेके आई थी. Oh wow. This mirror is also again golden. Everything is golden. Everything is white. gold. This lamp is gold. This is gold. Wow. Everything's gold. किचन में आप जाती हो कभी-कभी? हाँ शूट के लिए जाती हूँ. और जब रात को 2 बजे भूख लगती है तभी भी जाती हूँ. And this living space is like then open for everybody where you are like Yeah, chilling. so like this is mostly I'll go that side. Our space. Like we like to sit here most of the time. All of you. When we like sitting or chatting or however. And there's This is इसमें this water. Yeah. और ये चलता है. ये बहुत अच्छा है. ये भी मैंने बंद कर दिया. Soothing. I It's think. very soothing. उसको रखने का ही point ये था कि जब वो आप
बैठे हुए और फिर उसमें से आवाज़ आ जाती है जैसे कि झरने की आवाज़ आ रही है, तो वो बहुत ही कामिंग है। Yeah. और रात में हम इसे मूड लाइट कर देते हैं, तो जब आपकी True. मूड लाइट हो जाती है और फिर वो फाउंटेन हम ऑन कर देते हैं तो वो बहुत ही ऐसे कामिंग इंटेंशनल वाइब देता है। Listen, but I have to give it to you that you guys have followed the theme to the T. That lion is golden, the fans are golden and off-white. This is golden. The clock is also golden. Yeah. The lights are golden. This tissue paper box is golden. That car is That golden. car Do you is see golden. this? उसमें do you see the Gold. border is gold? What is this about golden and off-white that interests you? I don't know. I think it's always just been like this. It just feels very nice and I don't know, royal. Yeah. We really like it. I think the combination just fits very well. But when you were doing this up, so the patterns that you have on the Yeah. on the walls, Yeah. you guys were very sure that you want to do it. Whether design's done by you, how would you define home if you have to? I think for me, if I have to define home, I think it's more of a feeling than a place. Yeah, the feeling of comfort, the feeling of safety, the feeling of, you know, home for me is a place where I can just be myself without thinking twice, and I think this is that place for me. For me क्या किसी के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी चली जाऊँ, मुझे यहीं पर वापस आना होता है। नो मैटर मैं कौन सी जगह पर रुक रही हूँ, वो जगह कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है, लेकिन वो जगह आपको घर का फील नहीं देती है। तो जो जगह आपको घर का फील देती है वही मेरे लिए होम है और वो मेरे लिए ये है। सो दैट कितने साल हो गए इधर? दिस होम आई थिंक इट्स बीन अबाउट 9 years now, I think. 9 years. Abhi And 9 all running. 9 formative years of your life. Like Yeah. you've seen the most amount of success. This house is very very lucky for us, very lucky. In fact कुछ टाइम के पहले हम जैसे सोच भी रहे थे, you know, that's shift कोई दूसरी जगह जाते हैं ये वो, बट मुझे तो बहुत डर भी लगता है और मेरे पेरेंट्स को भी डर लगता है। You know, ऐसा होता है ना कि Yeah. कोई नई जगह, कोई नई गाड़ी तो सूट करेगी कि नहीं, कोई नई घर सूट करेगा कि नहीं। और ये घर जब मैंने मेरा लास्ट टीवी शो किया था तू आशिकी, उसके एंड में मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, और ये घर में कोई नहीं आया था। मतलब ये तब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी। जब हम घर आए तो इसके जो बिल्डर ने हमें वो जो दरवाजे पे भी वो नहीं प्लास्टिक तक हमने निकाली थी, बालकनी की प्लास्टिक हमने निकाली थी यहाँ पे। तो ये घर अनटच्ड था। वी आर द फर्स्ट पीपल टू लिव इन दिस हाउस। But what appealed to you about this house then? This beautiful space that you've made it. ओके, वन मोर थिंग आई विल टेल यू। जब ये घर में हम शिफ्ट हुए हैं उसके पहले मैंने ये घर देखा ही नहीं था, बिकॉज मैं शूट कर रही थी फॉर तू आशिकी। तो मेरे पेरेंट्स ने देखा था एंड दे लॉक्ड द घर। फिर मैं चली गई लंदन एक शूट के लिए। जब मैं लंदन से वापस आई हूँ तो ऑलरेडी हमारा आधा सामान यहाँ पे शिफ्टेड था, और जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने घर देखा ही तभी जब ये हमारा हो गया था। Wow. तो उसके And it was पहले already मैंने देखा ही नहीं designed था। तब तक. नहीं, वाजंट डिज़ाइन, हम शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे उसे, बट घर मैंने नहीं देखा था। तो मैंने स्टेप इन ही तब किया है जब ऑलरेडी हमारा घर So what was your first feeling when you actually stepped into this house? पहला feeling क्या था? पहला फीलिंग बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि मैं बताऊँ उसके पहले मैं बहुत डर रही थी। यही रीज़न से कि नया घर है, पता नहीं कैसे क्या ये वो फलाना। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आई थिंक वो फेयर या वो जो नर्वसनेस थी मुझे वो रही ही नहीं। एंड आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ वाइब्स। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ वाइब से, बीट होटल रूम का वाइब, बीट कोई मेकअप रूम का वाइब, बीट वैनिटीज़ का वाइब। अगर मैं वैनिटी में भी जा रही हूँ ना, उधर का भी मुझे वाइब देखना होता है कि अच्छी वाइब, मतलब मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ यहाँ पे कि नहीं निकाल सकती हूँ। तो घर की वाइब तो मेरे लिए बहुत ही अदर लेवल मैटर करती है। Yeah. तो यहाँ पर मुझे वो कोई चीज़ मतलब ऐसे कुछ डाउटफुल लगा ही नहीं। Warmth. There's warmth. Yeah, there is warmth, there is I don't know, there is some kind of intention here which I really like. That's so नियत बोलते हैं ना कि नियत। नियत से ही बनती है घर। मैं एक चीज बताऊँ, वो क्या है? Like what is that? कलमा है। अगेन जो मैंने आपको बोला, जो बाहर वाला फ्रेम था हमारा, वो हमारा इतना पुराना है कि वांट वाटर। No, I'm okay. ये भी उतना ही पुराना है। दिस ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो। दिस ये इज उतना ही पुराना है, तो this आपके is हर it. घर में ये था। यस, ये Wow. 3 चीज़ें थी जो हमारे पिछले घर पे भी थी, यहाँ पर भी हैं, और ऑलमोस्ट 2 डेकेड होने वाला है। You know, when we see the fans and the ceiling lights, was there an idea when you put it? When we see the whole wall decor, which is the TV wall, was there an idea behind it? So everything that you see here is all curated. It's all customized according to our ideas. इसमें से कुछ भी हमने जाके except for a few things जो आप जाके हैंड पिक करते हो, सब कुछ बना हुआ है। एक ये भी कस्टमाइज्ड है, ये हमने बनवाया है।
कुछ भी आपको ये रेडीली अवेलेबल कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बी इट दिस, बी इट द टीवी वॉल. द आइडिया आई थिंक इट वाज जस्ट दैट यू नो टू कीप इट नाइस, chic, minimal, and yes, very nice and Classy. elegant. Yeah. I think that was the entire idea for the whole house, not just this wall. Yeah. But you know, you can't, because see, Mumbai homes इतने तो छोटे घर होते हैं यहाँ पे. You don't want to feel cluttered also, है ना. तो कितना रखना है कि वो सुंदर भी लगे, कितना रखना है कि वो अच्छा भी लगे, कितना रखना है कि वो क्लटर्ड भी ना रखे. आई थिंक मुंबई के घरों में वो बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जगह ही कितनी होती है कि हम अपनी सारी चीज़ें, आइडियाज़ को क्यूरेट करके लगा पाएँ. So I think वही था basic idea, and that I think we've tried to achieve that. But somewhat. what's your most favorite comfort space in the home space, if I may ask? Comfort कौन सा एरिया है space. जो सबसे स्पेशल और सबसे ज्यादा मतलब you know gives you comfort, where you spend maybe most of your time? That would be my getting ready room, Okay. and that is very close to me. I'm mostly there only. I don't sleep there, but वो मेरे लिए it's like my prized possession, and it is very very close to me. You will see it. I'll take you in the room. Okay. But before that, there's a balcony here, right? Yeah, there is a Balcony is a balcony. luxury in Bombay, if I am Absolutely. not wrong. So, how much time do you spend in the balcony? Very rarely I go to the balcony. Very rarely. Very rarely. But why? I don't know. Maybe because I'm Too just busy. no, not too busy. Even when I'm home, I'm a homebody. So when I'm not busy, you'll find me home. But I don't know. पता नहीं क्यों नहीं जाती. अब चलते हैं I एक don't बार. know. Let's go now. Yeah, लोगों को दिखाते हैं. Yeah. Because the view from here is amazing. Yeah, and Because रात में तो और भी ज्यादा सुंदर दिखता है, because पूरा highway is just fully lit up I नीचे. shot with Ashnoor in the night. Yeah. So It was very oh सुंदर. my god, that view Yeah. is crazy. I can kill for that. तो रात का देख लिया तुमने? Yeah, रात अभी का दिन देख का लिया, देख. दिन का देख. Just look at Mumbai from here. Yeah. I know there's a little bit of noise there, but that's okay यार, होता रहता है. That's बॉम्बे just- में कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है. But tell me something, we were talking about glory, but do you feel nice that जो सपने देखे थे बचपन में वो थोड़े थोड़े करके पूरे हो रहे हैं? Yeah, absolutely. I mean, अभी if I can say, थोड़े थोड़े जो सपने देखे थे उसमें से बहुत सारे, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत सारे पूरे हो गए हैं, you know, और over the years होते ही जा रहे हैं, and there is no looking back, and it's just, I feel very grateful Yeah, to be able to even say this today. yeah. So yeah. But what was your dream? Like when you were a child, to have a house like this, to have a view like this? I understand everybody wants to have a house like that. But internally, what was your dream as an artist? जो आज पूरा हो रहा है. As an artist, I would say something like Glory, you know, because I took a break in 2018, okay, और फिर उसके बाद से I just was waiting for the right thing, और मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगने लग गया था कि शायद जो मैं वेट कर रही हूँ शायद वो नहीं होगा, you know, because इतना टाइम हो गया था. आप कितने टाइम पॉजिटिव रह सकते हो, आप कितने टाइम ये सोच सकते हो कि मे बी नॉट दिस, और ऐसा नहीं है कि there were no projects. It's just that it's very important to pick the right thing for you. Yeah. You know, not just for the sake of doing it, but because you want it to be impactful, you want it to make a difference, you want to actually feel happy about it. Correct? So I think currently latest में तो मेरे लिए Glory ही एक ऐसी चीज़ है. प्लस द फैक्ट दैट ये हमने 1.5 साल पहले शूट किया था, और तब से मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि यू नो मैंने किया है और ऐसा कुछ आने वाला है. बहुत ही कम, मतलब सिर्फ मेरे एकदम कोर सर्कल को पता था कि ऐसा कुछ आ रहा है, जब उनको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या है. तो आई थिंक दिस, एंड वन थिंग दैट वीव स्पोकन ऑफ कैमरा, Yeah. that is actually my dream that's come to life. That is actually my dream, my dad's dream, my brothers, my moms. That is something जिसकी हमें स्टोरी बहुत छोटे छोटे में बताई जाती थी, and that is exactly curated as per the dream that we saw. पूरा. पूरा ditto, like word to word. Wow. But I want to understand this, that, you know, Jannat, let's go and sit there Yeah, for okay. just this part, because it is so important. Sometimes I feel to have this conversation with you, because I know how family is so important to you, right? Your dreams are actually shared dreams. Yeah. How important does it become when shared dreams come to reality? एक होता है खुद का ड्रीम, you know, और एक होता है कि तुमको पता है कि मेरी फैमिली का भी ड्रीम वही है. Yeah. साथ में जब जीते हो 4 लोग मिलके,
we are also 4 people. It's a shared dream. Yeah. There's a different feeling, right? Absolutely. And I think वो बोलते हैं या तो एक की खुशी तो चलो खुशी होती, लेकिन अगर वही खुशी 4 लोगों की है तो आप देखो कितने टाइम्स इनटू हो रही है, करेक्ट? Yeah. तो आई जस्ट फील वेरी हैप्पी एंड यू नो द फैक्ट दैट कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे घरों में होता है, बहुत सारे बच्चे भी फेस करते हैं, पेरेंट्स भी फेस करते हैं, उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, कुछ पेरेंट्स की चीजें होती है जिसको बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं. सो आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ऐसी है कि हम Yeah. सब सेम पेज पर हैं व्हेन इट कम्स टू ड्रीम्स. So true. You know, this is so rare and I just feel extremely blessed कि हम चारों के सपने एक हैं, हम चारों अलाइंड हैं, हम कभी भी उन चीज़ों पे, बिकॉज मैं कभी नहीं चाहती अगर मेरे ड्रीम्स अलग होते तो मैं कभी नहीं चाहती कि मैं उनको चेज करने में अपने Would पेरेंट्स को have दुखी been- करूं. Yeah, it would have been difficult to वेरी fight डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. सो आई एम जस्ट ग्लैड कि वो सिचुएशन कभी आई नहीं और इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगी. it. नहीं आई. सो या इट फील्स Only it will only get better from here because you are the best. This I Thanks. genuinely want to tell you this, and I know you will believe what I'm saying because you know what I feel for you. But honestly, the audience should also get to know that there are very few people ना जिनके सक्सेस और फेलियर्स दोनों ही बड़े पर्सनल लगते हैं. कि अगर वो दुखी होते हैं तो खुद दुख होता है, और अगर वो खुश है ना, अगर उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो you feel like one of your own has won. या You will always be that person for me. Genuinely, I will always feel like if you win in life, I win with you, and that will always be my थैंक यू feeling नयन, towards you. दैट इज सो Genuinely. स्वीट. And on that note, let's move to your favorite corner, Yeah. जो you know एक सपने का also culmination है ना, to have that kind of a corner in life, because I think you've always wanted to be an actor and you've always been performative in theatrics and Yeah. arts. So that space I have seen, Let's so I go. think audience should see it now. So here it is. Come in. Oh my god. Look at this. The most colorful space in the In entire the house. house. Had to be Jannat's room. Had to be. Had to be, and it is. And the most, You're a perfume person. yeah, I like perfumes. Oh, then you will get many from me. I am a Yeah. perfume person. Yeah, So perfume, I like perfumes. you like perfumes, na? And ये क्या है? ये तुम देखो भाई. Listen, Yes, this is like your treasure heaven. it is. It Like, is. Oh my god. And this is my favorite part of the house. Of course, It is so clearly. close to my heart. It is very special to me. और मैं इसके लिए जितना sound like this materialistic person. No, but you've made From it. Max. I'm sorry, but if you have made Yeah, I it love on it. your own and you like it and you like I to love fulfill it. your own desires, why not? Everybody Absolutely. should be financially that independent to do and live their life, man. I am fully in your favor. So let's get on with everything. Like let's talk about the bags. कितने हैं? बहन इसमें कितने हैं? I mean, so I've never really spoken about this also because, like you rightly said, if it's making me happy, so everything that I have is just for me and not for anybody else to see. Like I'm very possessive about this also. Like it's mine. I will only see it. I'll only feel happy about Okay. it. I don't want to tell people also about this. But this is most of it, but this is not all of it. Of course. That we Yeah. know why all of it is not. Yeah, so clothes तो will not mention only because ये तो मतलब आधे का भी अभी भी you saw my auntie had come, she was taking everything out because it's being shifted to some other place. So कपड़े तो छोड़ देते हैं, ये सब में हैं, थोड़े कपड़े ऊपर हैं और वहाँ पर हैं. Bags I would say ये मैंने कलेक्शन मेरे बैग का स्टार्ट किया. मुझे कभी भी ऐसे मुझे पता नहीं था कि मुझे बैग्स का शौक होगा, but I think I started back in 2021 or 2022, I'm not sure. That was the first time I got my first luxury bag. Which one was that? The first one was this, the Lady Diana. I just felt that this was, Gucci bag. yeah, this was very ladylike and I just thought that ये मेरी personality को काफ़ी सूट करता है. तो उस टाइम पे भी मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी. So then एंड देन मैंने उसमें भी सोचा, मैंने कहा अगर मैं इसके बेल्ट अलग खरीद लेती हूँ, जो कि आप खरीद सकते हैं अलग अलग कलर्स के, सो देन उसको थोड़ा और एलिवेट कर देगा, उसको आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर, जो मैंने खरीदा नहीं, बट ये मेरा थॉट था बैग को लेने मैं के आपसे पहले. एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ. बिना हिचकिचाए आप प्लीज बताइए कि ये आपका पहला बैग था, राइट? या आपने कितने पैसे खर्च किए थे ये बैग खरीदने के लिए?
1,75,000. 1 lakh. How much do you use this now? Do you use it? I do use it, Yeah. not very often. In touch Yeah, because you it's have so also many, because so you can mix and match. yeah. तो बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, but I use it decent. And what about these bags? Which is your favorite bag from here? Chalo, show. Then that has to be like I will put this back. favorite bags होना चाहिए फिर. Favorite वो. bags. Bags. I mean, I can't like choose because एक तो एक बैग मेरे लिए बहुत ज़्यादा important चलो. है और बहुत close है और सबकी story. I'm not an impulsive buyer also. If I have to buy a bag, there has to be intent महीनों का उस बैग के पीछे. तो ऐसा नहीं है oh I walk in a store, I like it, I pick it. Yeah. ऐसा तो बहुत ही एक दो तीन बार. You're not impulsive shopper. I'm not an impulsive shopper. But Tell us 3 or 4 bags three. which have Okay, I'll tell stories. you. Okay, 3 or 4 I'll tell you. So this is one of those. The Lady Dior. This was one bag जिसके लिए मुझे ऐसा था कि मुझे चाहिए और particularly यही powder pink color, यही color में मुझे चाहिए This था. room has the most amount of color in the house Yeah. so far, by the way. Yes, had to. Yeah. Yeah. So this is one. This I got last year on my birthday, on my 23rd birthday. Okay. Oh, Yeah. lovely. Yeah. So this was my kind of birthday. Gift to yourself. Yeah, one of those. Okay. Then this is my first Chanel, and I love the color, and I love the Pastels are pastels. the I love. best colors. Yeah. So this I got last year on New Year's, and this was. I was really happy because ये मेरा impulsive buy था. मैंने नहीं सोचा था. I just walked in. I was like, लूँ नहीं लूँ. Chanel का कोई बैग नहीं है मेरे पास. फ्लैप ले लेती हूँ. कलर भी सुंदर है. ले लेती हूँ. कहाँ से लिया? अब इंडिया में या बाहर? This I got from Dubai. Dubai. Yeah. तो मैं I love और this also. The color is so. Okay, now I'll tell you one thing. अच्छा, so इसकी story also मैं और रीम गए थे हमारे न्यू ईयर ट्रिप पे to Dubai और तब उसने कोई ब्रेसलेट दिया था Chanel का और मैंने ये लिया था बट हमने दोनों ने साथ में कुछ शॉप Love किया you, था. Reem. Love you, Reem. So this bag, let me tell you, I have not used it once. I have not used this bag once. I just It's a got. sign. Can I just be very honest? I just don't think this is my style. I just got it because of the color and because it was trending then. So I got it because I had to. But I've never used it. I think you should. It's a pretty color. It's a pretty I bag think it also. looks nice right now also. But Then- then you've got cute wallets also. Yeah. So, but it's missing most used. But no, let me tell you one of my favorites again. This one. This is like my latest favorite because this is my first I love the Hermes. color. This is It's my a- first Hermes and this was offered to me. And anybody who is a bag person or a person who likes to shop, they know how big it is to actually when you are offered a bag from Hermes. So this was that, and I exactly got the same color and the same size that I wanted in the style. So this is also very, very. That's a proof of your achievement and the love that comes with it. So yes, it should Thanks. always be special. Yeah. But I mean, is there anything that anybody else has given you here which is special or close to your heart? I mean, इसमें से जब मैं जैसे कि ये बैग काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे मॉम डैड ने मुझे दी हैं जैसे कि ये एक बैग है जो वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे दिस वॉलेट उनका गिफ्ट देन दिस इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम देम एंड इसके अलावा और भी आई एम श्योर काफ़ी सारे हैं जो मम्मी डैडी ने मुझे दिए हैं यार मम्मी डैडी के अलावा अगर मुझे किसी ने कुछ दिया है No? No, I mean not in terms of bags. Yeah. But let's talk about the shoes and the stilettos and Yeah. everything. Like, are you a shoe person? I am a shoe person now. Like now I don't like wearing heels. एक तो I'm a short girl. I love heights. But then now I have to also look after my comfort. So अभी मैं बड़ी हो गई. अभी ठीक है अभी मैं हूँ छोटी तो मैं हूँ. अब उसका मैं क्या कर सकती हूँ? But मुझे comfortable रहना है. It's okay. It's fine. It's okay. You have to be happy with in your own skin, in your own height. Absolutely. So, but I do have heels also because पहनना ही पड़ता है और मुझे सुंदर बहुत लगती हैं
तो मैं खरीद लेती हूँ, बट टाइम टू टाइम मैं दोनों पर्सन हूँ. बट इसमें से if I can say this is my favorite, this is my most favorite, I really like, and maybe because it's pink. Of course. I'm so obsessed This, with pink. listen, I can tell you that I can see so much color here. I know this is golden, just like how it's supposed to be. But how often do you come here and get ready? I mean, this is my get ready room only. Oh, every day. So every day I have to be here if I have to get ready. So this is one corner where I sit. If I'm going on video calls, I only sit here. वहाँ पे मैं phone रखती हूँ. There's good lighting. You sit, you talk. When I have my team come over for my hair and makeup and everything, they actually set everything here. We get ready here. If I have to do my trials, I do it here. So this is my room. It's just not my sleeping room. उसके अच्छा. अलावा मेरा सारा operation, execution सब यहीं से होता है. There's a picture of you and Ayan. I Yeah. love it. I'm going to put it back. Guys, it's a very cute picture of somebody who is Jannat's life. Yeah. I think Jannat loves this person more than herself. Yeah. I totally understand that because elder siblings, I know I'm a younger sibling, so I know my brother feels the same about me. But I also feel that, and Ayan also feels that about Yeah, you. You he know that better. video of you saying that Ayan started crying just thinking about your marriage has 10 or 11 million. Yeah, you views. told me. I'm like, bro, like, but that day is That's going the to come. emotion. What is going to happen to him? You better ask him that question. But how will you react? My closest friend, who I used to stay with in Mumbai, she's my college buddy, but she's our adopted sister. My mother has adopted her as a daughter. It's like that. Like it's adopted, मतलब ऐसा नहीं. But I'm saying like होता है ना कि हमारी ही है. तो उसकी शादी थी, and we've all cried. My mother has cried. I've cried. We've broken down crazily. Like, Yeah. what are you expecting? I mean, I don't know. कभी सोचा है? No. And I can't. I mean, the thought of leaving my house or my parents or my brother, I can't even think of it right now. I think it's very difficult. Yeah. Especially for people like us who are so close to our Parents. parents and family. our... I can't think of it. Yeah. And I can't think how they must be feeling about it. Like, even if I'm out for a few extended hours, my mom would be like, I miss you, can you come back? Come back, I miss you. My dad would be like, where are you? Come, I'm missing you. So, you know, like my full family functions only like that. We function together. ऐसा नहीं है just for me. मतलब अभी आयान जिम गया है, अभी मैं उसे करूंगी कॉल कि कब आओगे? 1-1.5-2 घंटा कौन जिम करता है? आ जाओ. फिर मुझे पूछेगा क्या हो गया? कोई कहा नहीं तुम आ जाओ. You know? So it's just we're just so close to each other that I can't. That thought only I can't. I don't know. It's okay, there's a lot of time. And then there is this bed, Yeah. which you clearly said you don't sleep on. Please tell me the whole idea behind keeping the teddy bear and the colorful thing. I can see Jannat written there. Yeah, that's udhar a fan बैठते हैं. gift. Yes. So basically, I'll tell you the story of the teddies also. This was gifted to me by my dad on Valentine's Day ka teddy day. Because I clearly didn't have a Valentine. So he got me this. And this was last year's Valentine. He got me that. Then when you see these, वो हम नहीं जाते कभी कुछ game खेलने के लिए and then you win Yeah. a teddy or something. Yeah. All of those Ayan has won for me. Oh wow. Yeah. So that's about it. तो ऐसे कभी वैलेंटाइन जो वीक होता है उसमें आयान और डैडी चॉकलेट डे पे मुझे चॉकलेट मिलती है और रोज डे पे मुझे रोज मिलता है, टेडी डे पे मुझे टेडी मिलता है. सो दैट्स द रीजन इट्स ऑल हियर. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दैट वॉल, सो दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय फैन. उसमें लाइट भी जलती है, अभी उसमें नहीं जलेगी लाइट. एंड आई थिंक इट्स वेरी स्वीट, वेरी थॉटफुल. मुझे बहुत सुंदर लगता है तो वो वहाँ पर लगा हुआ है. बाकी जो वो फ्रेम्स है वो तो पता नहीं मैंने ऐसे ही लगा दिए थे. कुछ चीजें जिन पे मैं बिलीव करती हूँ. हाँ, which you know, good vibes only. Like I said that I'm a big believer vibes का. Don't stop until you're proud. This is our happy place. You were born to shine. I love that. Be a unicorn in a field of horses. Horses. You That are तभी वो one. बीच में है. Yeah, you are one. Create your own magic. Happy mind, happy life. Yes. I think ये चीजें we actually live by this. Yes. तो अच्छा है आपके रूम में रहें, उसकी भी वाइब्स फैलती रहे. But I want to tell you that thank you for inviting us home. Thank you for giving the audience a close sneak peek into your space.
And thank you for actually doing it with me. I know that you genuinely never wanted to do a home tour, but I'm just so happy that you said yes to doing it with me, Of course. and it makes it all the more special. And this is also the first episode of season 2, so Wow. I'm very happy that I'm opening with somebody who I call family. So thank you so much, Thank you, Jannat, Nayan, for doing coming. this. Give love to everybody. Spread love. Yes, हर जगह हर जगह प्यार फैलाओ हाँ, नफरत मत फैलाओ Yeah.